what is its speciality? There are 5 aspects of Anandanagar. One is that it is the headquarters of our worldwide organization. हमारे संस्था का एक global headquarter है. Because Baba visualized that Anand Marga at that time, which was only localized to even not even Munger district, it was very small and very localized in few districts of Bihar. But Baba visualized that a time will come when this organization will spread on the entire planet, and people will come from all parts of the world to come and to see our headquarters. So to develop our organization and to fulfill the needs of our organization, हमारी संस्था की जो ज़रूरतें हैं उसको पूर्ण करने के लिए बाबा ने ये एक आनंदनगर में एक हेडक्वार्टर्स की एक परिकल्पना बनाई. उसमें बाबा ने हर डिपार्टमेंट के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स की भी व्यवस्था की, और वो जो ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे दे विल क्रिएट मैन पावर, human resources in order to implement the different plans and programs of our organization. तो उसके लिए एक बाबा का एक बहुत बड़ा एक ग्रैंड विजन था. तो एक तो एस्पेक्ट है कि इट इज़ द हेडक्वार्टर, उसका ज़रूरतें भी डिफरेंट हैं. हेडक्वार्टर्स की क्या ज़रूरत है उसके लिए इट हैज़ डिफरेंट. लाइक जैसे हम लोगों का साल में 2 बार धर्म चक्र होते थे या धर्म महासम्मेलन होते हैं, तो उसके लिए हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं, तो उनके लिए व्यवस्था चाहिए, उनके लिए फैसिलिटीज़ चाहिए. तो ये सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सोचती है कि कैसे किया जाए. अभी तक हम लोगों का वो भी काम हम लोगों ने पूरे ढंग से नहीं किया है, लेकिन आनंदनगर में वो स्कोप है कि वी कैन होस्ट 1 million people, 2 million people, 5 million people in the future. क्योंकि there is lot of land, lot of space, there is water, river is there. Baba has given the concept of how to preserve water here. So that is very important. Second aspect is कि it is like the global master unit. एक संस्था को की नीड्स को फुलफिल करने के लिए केवल फिजिकल स्पेस नहीं चाहिए, इकोनॉमी भी चाहिए. उसके लिए इंडस्ट्री चाहिए, कॉमर्स चाहिए, एग्रीकल्चर चाहिए, एनर्जी के रिसोर्सेज चाहिए. इसलिए मेनी थिंग्स आर नीडेड इन ऑर्डर टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ अ कम्युनिटी. सो द मास्टर यूनिट, द चक्रनेमी, Anandanagar is like the Chakranemi. It is the global master unit. So it is also the guiding light for all the other master units all over the globe. तो उसके लिए भी बाबा ने यहाँ पर व्यवस्था की है, प्रोविज़न दिए हैं. और इस प्रोग्राम में चित्कृष्णन जी का जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत विजनरी और बहुत ही आगे जाके लोग इसको समझेंगे. ही हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल बाबाज प्रोग्राम्स एट आनंदनगर. सबसे पहले तो है कि बाबा ने यहाँ पर 50 एनर्जी रिसर्च सेंटर्स दिए हैं और थाउजेंड्स ऑफ कॉमर्स कंपाउंड, इनप्रो, फारप्रो, इंडस्ट्री कंपाउंड्स बाबा दिए. इनप्रो 1, इनप्रो 2, इनप्रो 3 करके बाबा ने कई प्रकार के यहाँ पर दिए हैं. और उसके लिए एक बहुत डायनामिक लीडर की आवश्यकता है, एक विजनरी की आवश्यकता है, एक केपेबल, एक कर्मठ वर्कर की आवश्यकता है. इसलिए इनके यहाँ आने से बाबा का वो जो एक मिसिंग पीस है, दैट इज बीइंग फिल्ड. And maybe even he does not realize कि what is the role he has to play here. It is such a historic role, such an important role.
उसमें केवल 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ की बात नहीं है, यहां लाखों करोड़ उनके हाथ से विल बी स्पेंट इन ऑर्डर टू फुलफिल बाबाज ड्रीम ऑफ आनंदनगर। तो उनका ये जो जुड़ना गुरुकुल के माध्यम के साथ और हेल्थ के साथ इसका बहुत इंटीमेट कनेक्शन है, क्योंकि हेल्थ का जो फाउंडेशन है इट इज लिंक्ड विद इकोनॉमी, इट इज लिंक्ड विद इकोलॉजी, इट इज लिंक्ड विद एनर्जी। कैन यू हैव गुड हेल्थ विदाउट प्रॉपर एनर्जी? आप ऑपरेशन थिएटर भी नहीं चला सकते हैं यदि आपके पास सिक्योर्ड एनर्जी नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है, क्या आप ऑपरेशन थिएटर चला सकते हैं? नहीं चला सकते हैं। इसलिए एनर्जी, इकोनॉमी एंड इकोलॉजी, यदि प्लांट्स नहीं है, हर्ब्स नहीं है, क्या आप मेडिसिन तैयार कर सकते हैं? क्या आप हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को? नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये बोले कि वो ही इज द विद्या प्रतिनिधि ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। केवल उतना ही नहीं, ही इज द एक बाबा का एक ग्रेस है उनके माध्यम से जो हम लोग फील करेंगे कि एक प्रमा एस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि यू कैन नॉट हैव हेल्थ विदाउट प्रमा। जहां इम्बैलेंस है वहीं पर हेल्थ गड़बड़ हो जाती है, जहां बैलेंस है वहां पर देयर इज परफेक्ट हेल्थ। इसलिए वो जो मिसिंग प्रमा के जो एलिमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए ये चित्त कृष्णानंद जी आनंदनगर में बैठे हैं। और ये जितनी भी चीजें आप देख रही हैं, दिस इज जस्ट ओनली अ स्मॉल ग्लिम्स ऑफ व्हाट इज येट टू कम एंड व्हाट इज येट टू हैपन इन द एंटायर लैंड ऑफ आनंदनगर। तो तीसरा एस्पेक्ट है कि बाबा चाहते थे कि ये इतना पिछड़ा हुआ जगह है ये, जहां लोगों को खाने के लिए भी समर में कुछ नहीं होता था, पानी तो होता ही नहीं था, तालाब सूख जाते थे, उनके जो द एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स दे हैड टू सर्च फॉर इवन वन टम्बलर ऑफ वाटर। इतना प्रॉब्लम यहां पर था कि समर में लोग केवल दे यूज्ड टू ईट ओनली ग्रास। और बाबा ने जो एक सायर का प्रोग्राम दिया, जो डैम्स का प्रोग्राम दिया, जो कल्वर्ट्स का प्रोग्राम दिया, और जितने भी प्रोग्राम्स बाबा ने वाटर कंजर्वेशन के लिए दिए हैं, जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती थी बाबा ने उनको नाम दे दिया अलकानंदा, मंदाकिनी, उत्तरा, दक्षिणा। तो ये जो बाबा ने जो ग्रेस किया है इस लैंड को, बाबा ने देखा कि देखो एक इसका हिस्ट्री बताते बताते बाबा बोले कि देखो एक टाइम था जब ये आनंदनगर में हिमालय से भी ऊंचे स्नो कवर्ड पीक माउंटेन्स होते थे यहां पर। दैट वाज आनंदनगर ऑफ द पास्ट। उस समय हिमालय वाज नॉट देयर। तो वो माइंड में रखते हुए बाबा ने मंदाकिनी और अलकानंदा और दक्षिणा कि यहां पर पानी की कमी नहीं होगी, लेकिन यू हैव टू डू एफॉरेस्टेशन। और ये जो गांव जो हैं, जो पीड़ित जो लोग थे, उनको कैसे उनको बेनिफिट हो, वो समझे कि प्राउड कैसे समृद्धि ला सकता है। प्रगतिशील उपयोगी तत्व इन प्रैक्टिस क्या है? इट इज थ्रू दीज एक्शंस दे विल बी गेट बेनिफिटेड। तो ये प्राउड का एक मॉडल भी था, और एक यहाँ के जो लोगों को की क्या ज़रूरतें हैं उनको फुलफिल करने के लिए बाबा ने काफ़ी प्लान्स एंड प्रोग्राम्स भी दिए हैं। फोर्थ आइटम आनंदनगर का जो स्पेशलिटी है वो ये है कि बाबा ने यहाँ पर गुरुकुल का हेडक्वार्टर दिए हैं। बाबा ने जब मुझे गाइडलाइंस दे रहे थे तो बाबा ने कहा आनंदनगर विल बी द हेडक्वार्टर्स ऑफ आनंद मार्ग गुरुकुल। He did not say Jamalpur will be the headquarters of Anand Marg Gurukul. He did not say Copenhagen, जैसे प्राउड का हेडक्वार्टर बाबा कोपेनहेगन में दिए, लेकिन आनंद मार्ग गुरुकुल का हेडक्वार्टर बाबा गेव एट आनंदनगर। इसीलिए जब मुझे संस्था ने कहा कि और भी प्रोग्राम हैं उसमें भी ध्यान दीजिए, मैंने कहा पहले तो हेडक्वार्टर को देखेंगे। बाबा मुझे ड्यूटी दे के गए हैं हेडक्वार्टर एस्टैब्लिश करने का, इसलिए आई विल फर्स्ट पे अटेंशन टू आनंदनगर। दिस इज माई प्रायोरिटी।
काम बाकी जगह भी चल रहा है, लेकिन दिस इज द प्रायोरिटी। अब गुरुकुल में बाबा ने यहाँ पर हार्मोन रिसर्च सेंटर, इलेक्ट्रो न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, about 232 agriculture research centers Baba has given here. He gave ancient literature research center, modern literature research centers, different flora and fauna के ऊपर बाबा ने कितने रिसर्च प्रोग्राम्स दिए हैं, माइक्रोवाइटा रिसर्च सेंटर, प्राउड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑल्सो बाबा गेव हियर। तो गुरुकुल के अंडर में देर आर 3 एस्पेक्ट्स। वन इज रिसर्च, सेकेंड इज एजुकेशन, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, और तीसरा है सर्विस। बाबा ने when he gave Anandamagar Gurukul, in one line he gave the motto of Anandamagar Gurukul, and that is to serve humanity with a neo-humanist spirit and to acquire knowledge for that purpose. तो यहाँ पर रिसर्च होगी, यहाँ पर एजुकेशन होगी, यहाँ पर ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज होगा, इंफॉर्मेशन होगा, और उसके माध्यम से समाज की सेवा भी होगी, कंसल्टिंग होगा, सर्विस होगा। आप हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में तो डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर कहाँ से आएगा? यहीं से ही डॉक्टर्स बनेंगे। इसीलिए हम लोगों को बच्चों से ही शुरू करना पड़ेगा, उनको ज्ञान देना, ताकि आगे बढ़कर दे विल बी एबल टू बिकम द मीडियम टू प्रोवाइड दिस मेडिकल सर्विस टू द लोकल कम्युनिटी। इसलिए गुरुकुल ने अभी एक प्रोग्राम लिया है टू एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस। जो फैकल्टी ऑफ मेडिसिन है, फैकल्टी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस जो है, उसी के अंडर में आप समझिए कि ये प्रोग्राम का भी इनिशिएटिव हम लोग ले रहे हैं। तो उसमें कई प्रकार के होंगे, पैरामेडिकल का भी होगा, उसमें नर्सिंग का भी होगा, और रूरल मेडिकल कॉलेज भी होगा, और मल्टीपैथी अप्रोच होगा। उसमें होम्योपैथी कॉलेज होगा, आयुर्वेद कॉलेज होगा, नेचुरोपैथी नटक, नेचुरोपैथी एक्यूपंक्चर चांसी, ये सब प्रोग्राम बाबा दिए हैं विद इन द स्कोप ऑफ गुरुकुल। तो और जो 5th आइटम है, इसके बारे में मैं और कुछ शेयर करूंगा, लेकिन द 5th एस्पेक्ट इज कि दिस इज अ सेक्रेड स्पॉट। आनंदनगर जो है, इट इज़ अ सेक्रेड साइट, इट इज़ अ सेक्रेड स्पॉट। इसलिए बाबा ने यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आनंदनगर में MG क्वार्टर्स बाबा दिए हैं, मार गुरु क्वार्टर्स। बाबा तो सब जगह पर रहने वाले नहीं थे, लेकिन क्यों बाबा ने ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में बाबा ने सेंट्रल आनंदनगर में MG क्वार्टर्स दिए, उसका प्रोग्राम दिए। और उतना ही नहीं, बाबा ने उसका प्लांटेशन स्कीम भी बताए कि इस MG क्वार्टर में ये वाले प्लांट्स लगाए जाएंगे, उस MG क्वार्टर्स में ये वाले प्लांट्स लगाए जाएंगे, इस MG क्वार्टर्स में ये वाले प्लांट्स। ही गेव अ डिटेल्ड स्कीम ऑफ प्लांटेशन फॉर ऑल दिस। और इस एरिया को सेक्रेड बनाने के लिए सभी फ्लोरा एंड फौना का इंटरेस्ट बाबा ने सोचा। इसलिए बाबा ने 88 सेंचुरीज यहां पर दिए हैं, 88 सेंचुरीज केवल बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए। और बाबा बोले कि, और वहां का प्लांटेशन स्कीम भी बाबा डिटेल में दिए हैं। शायर का अबाउट 2000 शायर का नाम बाबा खुद नामकरण किए हैं, खुद नाम दिए हैं। ये सब काम बाबा ने द लास्ट 3 years ऑफ हिज लाइफ बाबा डिड दैट। 1987 से शुरू किए बाबा, 88, 89 और 1990 में बाबा ने खत्म किया। और फिर लास्ट में बाबा ने लास्ट 40 दिन में 7 सितंबर 1990 को बाबा ने गुरुकुल की स्थापना की। और 21 अक्टूबर को बाबा शरीर छोड़ने के पहले 20 अक्टूबर को बाबा ने आनंदनगर का गान दिया और गुरुकुल का गान दिया। देखिए, यदि गुरु की इच्छा को समझना चाहते हैं तो ये सब जानना बहुत जरूरी है कि क्यों बाबा ने लास्ट 3 साल 22 घंटा बाबा ने टाइम स्पेंड करके ही गेव द प्लानिंग ऑफ आनंदनगर। और ये किसी को मालूम नहीं है, आपको और हमको मालूम होना चाहिए। बाबा का पूरा जो प्लानिंग है, दिस शुड बी नोन टू ऑल ऑफ अस, क्योंकि ये बाबा ने 22 घंटा जो बाबा ने टाइम स्पेंड करके जो प्लानिंग जो दिए हैं, तो उसमें ये जो रोल ऑफ फ्लोरा एंड फौना जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है।
इसीलिए क्योंकि आज जो डिजीजेज आ रही हैं, ये जो कोरोना आया, क्यों आया? कहते हैं चमगादड़ों से आया, ये बैट्स। तो यदि चमगादड़ अपने हैबिटेट में रहते हैं तो दिस डिजीज डज नॉट गेट स्प्रेड टू द ह्यूमन बींग्स। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि उनका हैबिटेट छीन लिया है, और हम लोगों ने अपने लिए हम लोगों ने सब जगह पर बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दिया। तो वो जो एक प्रॉब्लम जो कि एनिमल वर्ल्ड की थी, वो एनिमल वर्ल्ड तक सीमित नहीं रही, बल्कि ह्यूमन हैबिटेट्स में उसका ट्रांसमिशन होना शुरू हो गया। मैं जब पहले गुरुकुल की कैंपस को स्टार्ट करना शुरू किया, तो जहाँ हमारे पुरोधा प्रमुख वहाँ पहले रहते थे, वहाँ पर इतना बैट्स का स्टूल था वहाँ पर, आप एंटर नहीं कर सकते थे, तो उनके लिए हम लोगों को प्रॉपर व्यवस्था करना होगा। जैसे हम इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, उसी लिए हम बाबा ने इस पर बहुत जोर दिया है कि हम लोगों को 88 सेंचुरीज का निर्माण करना पड़ेगा, और वहाँ पर पौधे, वहाँ पर प्लांटेशंस जो वहाँ होंगी, दैट्स फॉर दोज क्रीचर्स। तो जो बाप बोले कि टू सर्व ह्यूमैनिटी विद न्यू ह्यूमनिस्ट स्पिरिट एंड टू एक्वायर नॉलेज फॉर दैट पर्पस। भारत में 3 नए सिटीज का निर्माण हुआ। जैसे एक था चंडीगढ़, वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि जितना एग्रीकल्चर लैंड था सब ले लिया, और वहाँ पर बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने बड़े बड़े गार्डन्स और ये सब करना शुरू कर दिया। लेकिन कि कैसे ये सस्टेनेबल होगा ये सिटी, अभी गवर्नमेंट से, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, इसलिए गवर्नमेंट से करोड़ों रुपया आता है हर महीना और हर साल उसको मेंटेन करने के लिए। कोई थिंकिंग नहीं है, सस्टेनेबिलिटी का कोई प्लानिंग ही नहीं था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माइंड में, बल्कि जो सस्टेनेबल जो लैंड था उसको आपने अनसस्टेनेबल कर दिया, केवल एक वाइट सीमेंट के बिल्डिंग्स बना के। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन बनाया। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू बिल्ड एन आइडियल, उनका एक परिकल्पना तो बहुत थी उनकी, एक आर्टिस्ट, ही वॉज एन आर्टिस्ट हिमसेल्फ, ही वॉज अ वेरी सेंसिटिव इंडिविजुअल। तो ही वॉन्टेड टू बिल्ड अ स्कूल, एंड देन उनके ग्रैंडफादर ने स्कूल स्टार्ट किया, उस स्कूल को उन्होंने यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया व्हेन ही गॉट द नोबेल प्राइज। लेकिन आज वो इंस्टीट्यूशन जो है, गवर्नमेंट से करोड़ों रुपया आता है, 232 crore rupees they get, then only that institution can run. Otherwise, tomorrow the whole institution will fall down. He had the desire, but there were not aware people, knowledgeable people who understood his vision and who could implement and establish that model city. Aurobindo Ghosh, in South India, पुदुचेरी में उसके पास उन्होंने एक सुंदर एक टाउनशिप बनाया. इट बिकेम ग्लोबल heritage, because he wanted to establish a global township. But before, the French people were living there, his followers, French people, they were living there. So all the money used to come from France to take care of that place. Then the government said, either you become the citizen here, all the French people, the government told them after independence, in 52, 53, 56, either you become the citizens here, or you go back. So they had to find the way how to sustain it. So they live there, but for 6 months, 3 months, they come on tourist visas, they come and they stay there, and they help to maintain that city. It is partially union territory, partially it is maintained by some small businesses, and partially it is still run by the support from outside. So we have some living examples before us. And Baba, it's very important to understand what is Baba's concept of development for Anandanagar. Because if we don't understand, we will make the same mistake what the followers of Aurobindo Ghosh have done, what the followers of
Rabindranath Tagore have done, and what the government of India has done in Chandigarh. When Jawaharlal Nehru declared that this will be the future, a model of future India, he had a great dream. They brought an architect from America to design the whole city of Anandanagar. He died in a plane crash. There was a Polish architect working with him. I think he died in a plane crash. And then they brought a French architect, Le Corbusier, who came and he would design. But he designed according to his Western mindset. So what he did was that all the residence was in one side part of the city and all the government offices were on the other side. So in the morning, thousands of people would go on bicycles to go from one part of the city to the other part of the city, where the secretariat was there, the law, the courts were there, and and all the other government establishments were made. So, and he stratified the society. For rich people, big plots of land, 6 canal plots, and for poor people, now when you look at today, it is just becomes a pensioner's paradise because nobody is living there. People live abroad and their one son, and they come for a few months and they stay there. So it is a pensioner's paradise. Now after the grandfather died, the children fight for that piece of land. So within that same plot of land, in every house there is a fight going on because the price of the land is so much, crores and crores of rupees. One house which was built by the grandfather, today it costs 40 crores, 50 crores, 60 crores. So if there are two sons who are born, they say, give me 20 crores. The other says, give me 20 crores. They all want to do this. What they are doing is, they are giving it to the contractors. So what contractors do is, they take they build a 4-story building, and they take 1-story building for themselves, and they give the rest to their different children. So there are problems. This place is not for different households. Anandanagar is built on a different concept. It is a global service center. So that's why when Baba, has given this planning of thousands of small industries with most modern technology, and Baba was very progressive. He said we should use the most modern technology. We should use the renewable energy, not use, this diesel, but we should use solar, we should use wind, we should use pneumatic energy, which is under the ground. Even we can take that out. There are many possibilities to make Anandanagar self-sufficient for its energy needs, for its industry, for its farm products. Agriculture, so many agriculture projects have been given by Baba. He created a natural gene bank, means he brought plants from all over the world. And Asimananji, today you see all these palm trees, they were not here before. They are all planted by Asimananji. And as per the directions of Baba, the things, Asimananji used to give us a big long list of, 300 plants which we had to bring. I was SS of Berlin sector at that time. I remember how we used to collect all those plants and bring here. Chirkeshanji was SS of Manila sector at that time. He brought the biggest flower, which is available in the Indonesia, Malaysia, for Baba. So, we have to link our mind with Guru's desire. And if we will work in harmony with Guru's wishes, with Guru's desire, then there is no power on earth which will be able to stop us. And the whole world will come here to look at this model for the whole world. This place is not only for you and me and for people living in Chitmu, or for Guridi, or for nearby areas. This place Baba wanted to show his grace for the entire planet Earth, and people will come here and they will feel his grace. And we can already see Paraguayan coconuts, cashew nuts from Kerala, from different places. There it is already part of this land. So we have to convert that agriculture into farm products. And that again, we need the industry faculty, commerce faculty to help us
to translate those very precious resources, renewable resources, which can generate income, and it will make it prosperous. So the main idea of Prout was that there should be prosperity, there should be abundance. But nobody knows how to bring that abundance. Baba gave the formula: you align your economy with ecology, with nature. Because where there is nature, there is abundance. You plant one seed, you get 100 seeds. So if we will take care of nature, then the nature will bring abundance to us. And the best renewable resource is agriculture. That's why agriculture is the mainstay, not only commercial agriculture, but diversity of plant, flora and fauna. Flora and fauna is very important. These birds are very important because they are the ones who spread the seeds. And they are like your natural gene bank. You know, the government gene bank can get destroyed by some natural calamity. But what these birds do for the agriculture, that no government can do for us. That's why we have to preserve every bird and every insect and every animal and every aspect of flora and fauna, because they will help us to bring prosperity in Anandanagar. Unless we realize the importance of it, we won't be able to build a new humanistic model, and we won't be able to secure the health. There is remedy for every disease in the plants, in the herbs, and it is available right here. But if we do not know, if we don't have that knowledge, then what happens? We go to the doctor, he gives us some allopathic pill, and we eat it, and half we get cured and half we get more disease because there are so many side effects and we lose so many things. So health and the plant world are very closely linked. Health and minerals are very closely linked. Health and energy is very closely linked. Health and ecology is very closely linked. Health and economy is very closely linked. If we provide good food, nutrition to the children, you won't have problem don't need to go to the hospital. But I find today that small boys and girls today, they have so many diseases because they don't know proper diet, proper health rules and things like that. So that is why education, health education is a very important aspect. There are different, if I am taking more time, please stop me, I will stop. You see, if we are, when we get sick, we can go to the homeopath, we can go to the Ayurveda, we can go to the naturopath, we can go to the, different systems of medicine are there. Now, but till today, we do not have a comprehensive understanding of the human body which will show the limits and efficacy of different healing traditions. अब किस situation में homeopathy will work, किस situation में allopathy will work, which situation में biochemic will work, in which situation acupuncture will be better. Because we don't have a comprehensive understanding of the human body. Because allopaths look at this body in a different way, homeopaths look at it in a different way, Ayurveds look at it in a different way, Hakims look in a different way. This is the biggest flaw of the health education and health system in the whole planet today. That we do not have a proper model of the human body. And Baba gave Microvita to fulfill that lacuna. He said that this body is not only made of organs, there is mind in the body. In every cell there is mind. Protozoic cell is the physical part and metazoic cell is the mind of the cell. If you only treat the physical cell but not the mental cell, you cannot cure the person. So we have to understand first, what is this body? This body is not only
consisting of physical things, which is like salt, like oxygen, like nitrogen or potassium or zinc or any of these things. Yes, the body also needs these things, because if you don't have those things, so even the so-called inanimate things, they also are necessary for this body. हम लोग सोचते हैं कि if we have the what is living is more important, but what is non-living is not important. Can the body exist without salt? Can the body exist without oxygen? When Corona happened, what happened to people? Were running in the hospitals trying for oxygen. But we are cutting all the trees. Where are we going to get the oxygen from? Oxygen doesn't come from the sky, it is, it is provided in nature, but to maintain it, to preserve it, we need to have a certain balance in the society. So that is why inanimate should not be disregarded. Inanimate should not be treated as inanimate, because even in inanimate there is microvita. There is positive microvita, negative microvita both. So sometimes the negative microvita has to be used in order to counteract the certain negative microvita. Like you cut the diamond with a diamond, So we need, inanimate things also. Second, that we have also certain subtle energy. Mind, you cannot understand. Today the medical science has not understood what is the role of mind in disease. How to cure, for example, pranayam. Why does pranayam work? It works because when you do pranayam at a certain point, which is the controlling point of the mind, and if you apply pranayam at that point, we have different types of pranayam. It strengthens the mind of that particular plexus. And when you strengthen that, that helps to control all the different glands and subglands, and that's how we are able to control the disease. So the mind in yoga, in meditation, in our spiritual science, plays a very important role in health improvement. And third is that we are not only mind, we are also spirit. We are also something greater than the mind. That consciousness which permeates this whole creation, that also has to be tapped. That energy also has to be tapped. So ours is a holistic approach, a microvita model of human body, which gives scope to the physical things, to the psychic things, and also to the spiritual things. So ours is a multipathy approach. We will utilize different multiple systems of therapy, but also we will understand that there are different levels of energy. There is cruder energy, there is subtler energy, and there is more subtler energy. So our approach to the Gurukul's approach is going to be, in order to bring about a certain ecological balance in the body. When that balance is disturbed within the body, we get sick. When the balance is disturbed in the environment, more and more sickness spreads and comes. If flora and fauna are destroyed, sickness develops. So how to bring about this all-round prama? Now the most important of this is going to be, knowledge. There are 3 stages. In Gurukul education, there are 3 stages. One is called the stage of knowing. Second is the stage of doing. And third is the stage of being. So knowing, also there are different stages. One is the stage of awareness. You can be aware. You can know smoking is bad for health, but you can still smoke. You have awareness, but you still smoke. So awareness alone is not enough. Information brings awareness. That is only the first step. The second step is that awareness has to be translated into attitude.
positive attitude, positive mindset. I know something is good, but I also have that conviction that if I don't follow it, then I will become sick. So I have to follow it. And not only I have to follow it, I have to educate others also so that they also follow it. So this is, we are going beyond the stage of awareness or information to, development of skills and development of attitudes and predisposition and mental outlook, mindset. Because when that happens, that's very powerful. That is more powerful than actually taking the medicine. Because you can cure the disease with the mind itself. Because the first derangement takes place in the mind level. Then derangement happens on the physical body level. So if we want to cure diseases, we have to cure the distorted minds. We have to first educate the minds and put them on the right path. That's why we start from kindergarten. From the schools I have started in Chitmu, the children, they learn anatomy and physiology from 3 years of age. They will tell you frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe, occipital lobe, what is the function of different lobes of the brain. They'll tell you about different glands, pineal gland, pituitary gland, what is the hormone secreted by the pineal gland, by the pituitary gland, where is thymus gland, where is adrenal glands, what is the function of skin, how many kidneys are there, what is the relationship between kidney and skin, because they have the same function. Just like kidney is removing all the urine and all the toxic things from the body, in the skin also, through sweat, you are removing the same thing. So skin does the same function like kidney. It is like a stepney. It's just like, you have an extra tire, you always keep with you when you ride your motorbike or your car, because anytime, if one kidney fails, if kidneys fail, the skin will do the job of the kidney. So, this body is very complex mechanism. It's not only as the medical scientists, they tell us about, there are 3 different, only the physical dimension. No, there is a physical dimension, there is a psychic dimension, there is a spiritual dimension to this body. And that's why this knowledge has to begin from a very early age. Because unless you change the mindset, unless you change the worldview, unless you change the attitudes, information alone will not bring about a balance in the society. It will not remove the ill health from the society. If we want to remove ill health from the society, then we need to bring about, this balance in every sphere of life. That's why Baba called Prama Samvriddhi, Prama Riddhi, and Prama Siddhi. All 3 are needed. आप थक तो नहीं गए? मैं तो बहुत कुछ बोल रहा हूँ. You see, what is Prama Samvriddhi? It's like, a triangle has 3 legs. 3 legs. So, this 3 legs on which the physical balance is maintained are, one is that you have desires. Then second is, to fulfill those desires, you need certain things, goods and services. And third thing is, you need purchasing power. Okay. So I'll close after this. So, purchasing power. And unless these 3 will be filled up, Prama Samvriddhi will not come. Similarly, Prama Riddhi, as I mentioned, information, attitude, and being. Not only knowing, doing, and being. Means we have to implement our actions. And finally is Prama Siddhi, which is through sadhana, through surrender, through samarpan, through seva. This is the way we'll be able to bring about, total balance. So, that's why I think that Gurukul concept of health sciences is very important for us, and I'm very glad that Rameshwaran Dada has taken the initiative to make it possible for this to happen.
So thank you very much for being patient and giving me this opportunity to be with you today. Thank you. Namaskar.